Hey guys, welcome back to my channel. In today's video, हम करने वाले हैं Get Ready with me with this Indian outfit, which is Indo-Westo क्योंकि wait. Now you can see my whole fit. So this is my fit, and we are gonna get ready accordingly. So yeah, for the start, we'll start with our base, which will be our very own Molten का moisturizer because कुछ हो ना हो moisturizer होना is important. So हम moisturizer से start करेंगे पहले. Moisturizer. I like to, keep my moisturizer. Like I take a bit part of my moisturizer and then I apply it like how we apply a cream. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो डैब डैब करने से बेटर है कि जस्ट टेक अ पोर्शन इन योर हैंड, रब इट एंड अप्लाई. आई मीन इससे पूरे स्किन में भी अप्लाई हो जाता है एंड इट्स गुड. आई लाइक टू अप्लाई माई मॉइस्चराइजर दिस वे. You all should also try sometimes. It's good. एंड हमको लगा था कि इस बार शिरडी में बहुत ठंडी होगी, बट इंस्टेड शिरडी में बारिश हो रही है एंड शिरडी में इतनी गर्मी है कि मैं क्या बोलूं. बट ठीक है, वॉट एवर वर्क्स. एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर हाथ में लगा लो, बेस्ट. नाउ आई लेट माई मॉइस्चराइजर ड्राई. तो उसके बाद मुझे फैन ऑन करना पड़ेगा. मैं फैन ऑन करके आई. सो मॉइस्चराइजर हो चुका है, सूख चुका है एंड अभी बारी आती है सनस्क्रीन की. Now I use Molten का ही sunscreen because I feel it is very good because it has that ice वाला something. I don't know, but yeah. Three finger moisturizer, three finger sunscreen. It's a very good, sunscreen and moisturizer. बहुत अच्छा है. Even my mom use it, I use it, and I recommend you all to also use it because it is very good. सो हमारा सनस्क्रीन अप्लाई हो चुका है एंड बोला जाता है कि सनस्क्रीन लगाने के अपार्ट लाइक ऐसा 20 मिनट्स बाद हमें बाहर सन में निकलना चाहिए. पर मैं तो 1-2 घंटे बाद निकलने वाली हूँ, क्या फर्क पड़ता है. एंड आई लुक सो गोरा. वाओ, मैं इतनी गोरी हूँ नहीं, बट हु केयर्स. आई मिस मनाली because I love Manali. I loved Manali. मैं वापस जाऊंगी, but Manali नहीं जाऊंगी. I'll go to Himachal Pradesh because Himachal Pradesh is so beautiful. It's, I mean, जो भी मेरा देख रहा है व्लॉग, 50 लोग, 100 लोग, 200, 300 आगे चल के देखेंगे. अगर आगे चल के देख रहे हो तो I'll say please वर्क लाइफ से थोड़ा सा स्पेस निकालो, कॉलेज लाइफ से थोड़ा स्पेस निकालो, earn a bit and please invest that money on your trip. One trip in a year is necessary and go to Himachal Pradesh if you stay in India. And जो भी इंडिया से बाहर बाहर से लोग आ रहे हैं, please go and visit Himachal Pradesh. This is such a beautiful city, town, state. Everything in that is so beautiful. I loved it, and we all will love also. And मुझे जो चीज अच्छी लगती है, that is apart from everything. But yeah. So moving on, we'll apply concealer. जो मैं ढूंढती हूँ. So I basically applied 2 eyeliners. So I basically apply 2 concealer to, match with your skin tone and hide the dark spots that I have. जो hide नहीं होता है, just like my life.
हाँ हाँ, मुश्किलें कभी हाइड होती है नहीं. So it is like thoda sa dark tone which matches my skin perfectly. So I'll apply this on the part where there are dark spots. Like यहाँ हो गया, यहाँ, यहाँ, यहाँ. Even the darker area around my lips because girls cannot show their flaws. So yeah, यहाँ, यहाँ, oh yeah, under eye necessary because कुछ भी हो जाए तुम्हारे डार्क सर्कल्स नहीं दिखने चाहिए बिकॉज डार्क सर्कल्स आर साइन ऑफ वीकनेस. नो गर्ल्स, if you like to show your dark circles, show it. I'll say flaunt it bro. Nobody cares. मेरी इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान मत देना. It's not that good, but ठीक है. Who cares? I do not care. If you are watching my vlog, don't care. Do not give a shit to the world because the world does not give shit to the you. तुम खुद कमाते हो, खुद उड़ाते हो, दुनिया आके तुमको नहीं दे रही है अरे भाई ले लो. तुम जाके इंटर्नशिप ढूंढते हो, करते हो, अर्न करते हो, उड़ाते हो. इज सिंपल एज दैट. नाउ आई टेक दिस थोड़ा सा लाइट शेड to the areas where I had already applied my past past से तो here. कितना बोलती हूँ मैं, मुझे थोड़ा बोलने का कम करना चाहिए. It's not good for my health. Now we'll blend it. So I personally prefer blending with a brush because it's very pooky. But मैंने मेरे फॉल्स लैशेस लगवाए हैं तो मुझे अंडर आई में सिर्फ पफ के साथ करना पड़ेगा क्योंकि वो लैशेस में लगते हैं तो फलाना फलाना होता है. तो मैं इसको थोड़ा सा गीला तो मेरा ब्रश गीला हो चुका है. जस्ट अ ब्यूटी नोट टू ऑल द फीमेल्स आउट हियर. Whenever you blend something na, please wet whatever you are using. Like if it's a brush, if it's a beauty blender, sponge, jo bhi ho, just wet it thoda because it will blend very smoothly and it will give that natural effect to your skin. And I look horrible right now, so I'll just blend it fatafat. So maybe ये वाला vlog मेरे एपिसोड नंबर 4 से पहले आएगा because I wanted to do something which I've never done in my YouTube channel and I feel like I'll be constant with my YouTube abhi because I love doing YouTube and let's see where it goes. I have 10k followers in my Instagram. इस ईयर तक 50k क्रॉस होना चाहिए होपफुली, जो हो जाएगा. बट ये खुल क्यों नहीं रहा है एंड मेरे घर पे कोई है नहीं खुलने के लिए. या सो whoever is waiting for my Manali vlog 4, थोड़ा और रुकना पड़ेगा क्योंकि I'll post this video first. एंड या ये मैं खोल तो मैंने मेरे पेशेंस नहीं था तो मैंने ये फाड़ ही दिया क्योंकि ये खुल नहीं रहा था. तो या nobody cares. So I'll take a cutesy pink color का beauty blender because aesthetic over anything. So ये beauty blender को भी मैं थोड़ा सा गीला करके आई. So मैंने beauty blender को गीला कर दिया and nobody will judge my room because मेरी फैमिली में बच्चे भी हैं एंड वो बच्ची मैं ही हूँ तो ये घान मैंने ही किया है. बट नो बडी विल जज because I don't judge you all Q2s, you all should not judge me. So मेरा storage full हो चुका था and I had to delete a lot of stuff from my phone. दिल पे लग रहा है but YouTube के लिए कुछ भी. So now we are blending under eyes. Dab 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 dab. Extra part you can always apply to upper eyelid and see how see how seamlessly it applies. And मैं यहाँ पर करना भूल गई थी blend. So
Hopefully I have enough storage for this, but ठीक है, let's see. Yeah. So one thing about my makeup routine is I do not use foundation. I know I should use it because I don't like the concept of foundation. I feel it makes my skin very cakey, and I just don't like the concept of foundation. Concealer I can wear because it hides my dark spots, but no foundation. I'm so sorry, foundation, if you're feeling bad about it, but I don't like you. Yeah, whatever. Now we'll go ahead with my आगे वाला step. So अभी I'll prep my lip with lip balm. So here is my lip balm. Shout out to Akhilesh. मेरे को याद है I had post one of my reels regarding this, get ready with me. And मैंने मेरा lip balm show किया था. And then Akhilesh was like कि Vaseline का stock अभी ऊपर जाएगा. Akhilesh, shout out to you. Yeah, so we'll apply. ये हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज करता है. सो यू शुड ऑलवेज अप्लाई अ लिप बाम और लिप केयर या वट एवर फलाना ढिमकाना यू ऑल से, because it helps to moisturize your lips, and when your lips is hydrated, girls, take the hints. Now we'll go ahead with my cheeks and some of the area which I would like to highlight with my with my blush. So apparently I don't have a blush right now because मैं अपना blush घर पे भूल गई थी. So I have this West Side Studio West का this one lip plumber, which is basically to plump your lips, but it works as a blush very nicely. I love this. I don't know what is this, but it is just so good. It is very nice. So we'll apply इधर से थोड़ा ऐसा. Then we'll take the same brush, क्योंकि मैं brush भी भूल चुकी हूँ, तो yeah, blendy 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 blendy. Again यहाँ पर we'll apply, and then यहाँ पर also blendy 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 blendy. Ow. I love blush. मुझे blush blindness करने बहुत अच्छा लगता है, but that is not a good thing. I mean, it is if it, I mean, it feels good to you. It is good that अगर मन कर रहा है तो कर दो. Simple सी बात है. थोड़ा सा नोज में और रेड, a little dots, क्योंकि I can do it. Yeah, we are done with the blush wala part. So basically, this is a lip tint which I would like to, apply to my eyelids. Because why not? Whatever makes me look pretty. मुझे मनाली में भी गेट रेडी विथ मी बनाना चाहिए था, बट आई वॉज टू लेजी एंड आई वॉज वेरी कंसर्न्ड अबाउट माई स्टोरेज ऑल्सो. सो या, so eye base is also done. Now it's time for what? It's time for my eyeliner. But मैं मोबाइल में देख के eyeliner लगा सकती हूँ. I don't know, but let's see. So here is my eyeliner, guys. Talia. It's from L18, but I prefer Lakme का eyeliner because I just love it. But yeah, L18 की मैं ambassador थी. So I'm दिल से L18 girl. So I'll promote L18 इधर भी. So yeah.
I have to. Don't please judge me if I do anything. So yeah. Does this eyeliner look even? It does. Now it's time for the very crucial part, which is the wing. Ha. Wow, what an eyeliner, guys. मेरा eyeliner done हो चुका है and it looks perfect. मैं और कुछ नहीं करूँगी तो वो बहुत messed up हो जाएगा. And yeah, eyeliner queen. Thank you, thank you, thank you. Now it's time for highlighter from Maybelline Kiss. It's like a blush kind of thing, but I like to use it as a highlighter because मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही हाइलाइटर है और वो ये है. एंड या यहाँ 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 एंड यहाँ एक चीज अच्छे से सिर्फ हाईलाइट कर सकती हूँ मैं, वो है मेरा फेस, बिकॉज माई फेस लुक्स रिच. Oh my god, the shine. Can you all see that? Can you all match that? Boys, y'all could never. Now it's time for the most awaited part, which is lip lip. So I'll start with the very basic base, which is known as lip liner. अगर lip liner ही तुम्हारा सही नहीं लग रहा है तो I'm so sorry. I cannot help with the further thing. So yeah, always start with the lower lip. So we are done with lip liner. इधर कोई notice नहीं करेगा. But yeah, slate. Lip liner के बाद I'll apply a lip tint. This lip tint again because I can. Lip tint के बाद I'll apply this Teddy tint from Maybelline again because it is very nice and the texture is very creamy. I mean, and it suits my skin tone. So yeah. Should I do a glossy lips or a matte lip? Hmm. Or a dark lip or a light lip? I feel I should do a mixture of mix. No, I should do a glossy lip with a dark tint because I'm wearing Indian, so again the plumber, Talia. So this plumber we'll take a thodu sa part, like a bit part, dot 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 and dot.
Damn. Damn my lips. My lips. मैं लड़का होती तो मैं फिर से स्टोरेज फुल हो जाता है, तो मैंने फिर से बहुत सारी चीजें डिलीट कर दी। एंड हाँ, आई वाज सेइंग कि अगर मैं लड़की होती, सिया, इट वुड हैव बीन यू वुड हैव बीन द चोजन वन, पर आई नो राइट मैन। सो हाँ, अभी इसके बाद we'll finish off with a compact, because loose powder, I don't do loose powder wala thingy. So yeah, wiped it again and take compact. थोड़ा सा excess इधर निकालो and dab 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 dab. Take again, dab 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 dab. Take again, dab dab dab. Wow, I look so beautiful. So yeah, the makeup is done. I look pitch perfect. बाल ठीक है, बाद में बनाते हैं. लेट्स एक्सेसराइज. इतना कुछ एक्सेसराइज करने को है नहीं. जस्ट टू थिंग्स, वन इज नोज पिन एंड वन इज इयररिंग्स. सो अपेरेंटली लाइट चली गई है. सो will that stop me from vlogging? No. Will that stop me from doing makeup? No, क्योंकि मम्मी आके गाली देगी अगर मैं रेडी नहीं हुई तो. So this is my cute little earring. No, this is my cute little nose pin. जो हम आई गेस यहीं पहनते हैं. लग नहीं रहा. तुझे नोज पिन, इयरिंग, eyelashes, bling bling लग नहीं रहा. ये मैं क्या करूं? Wow, nose pin and this cute little rings. Well, this ring was given by my dadi back around 2022, yeah, 2021, I don't know. This is silver ring. This was given by my sister on my birthday, which is again silver ring. And this was given by my mom when I was going to Manali. Yeah, it's also a silver ring. So yeah, I have like अच्छा खासा silver rings. I don't do nakli makeup. And this nose pin ठीक है. So well, I have two options for my ears. One is this little, एक minute. One is this little jhumkis. I'll wear it and I'll see. One is this. बाल खोल के देखती हूँ. Wait. One is this. The other one is थोड़ा सा छोटू सा, but makes the same impact. Another one is this. I feel this is good, but I want to wear that too. Mm, very indecisive. कौन सा पहनूं, कौन सा पहनूं? Hmm. I'll go with this. So I
went with this earrings because the whole purpose was, no, going as ekdam bra, flory. The most important part of my makeup, my get ready with me, is bindi. Perfect. Perfect. Not शेडोफाइंग मुझे ना नजर लग जाए. थु 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 थु. या सो बिंदी भी बराबर लगी है ना. बिंदी भी लग चुकी है, सब हो चुका है. Last and final part of the makeup is to put a makeup fixer. Makeup fixer, ta-da-da, from Huda Beauty. Oh, इसका कैप ही नहीं है. So sorry. So makeup fixing. Now I'll have to let it dry air से क्योंकि लाइट तो चली गई है. पंखा नहीं चलने वाला. हाँ. Will this help? Let's see. No, it does not. Do I have a book or something? कुछ भी चलेगा, बट कुछ भी नहीं है. Yeah, whatever. So अभी हम करेंगे हमारा मेकअप पैक क्योंकि मम्मी अगेन चिल्लाएगी. Is her nose pin, earring, eyelashes, मैं बहुत मिस कर देती हूँ whenever I do my makeup, which is a very bad habit. You should not do that because मम्मियाँ चिल्लाती हैं. Makeup pouch is ready and we're okay. Oh well, I had one more thing. I have this like amboda wala thingy, but I don't wanna ruin my hair, so I can wear it like a. Did I do something? Ah. So instead, I'm gonna wear it ऐसा. I mean, it hurts थोड़ा बहुत. It hurts. It hurts. I have a plan. Wait. मैं ये वाले रबड़ को ऐसे पहन के I'll make a layer. Wait, I'll show you what layer I'm talking about. If that works. Basically, I opened it like ऐसा. अरे यार. And now there's a layer on layer. Now let's see. Now we'll wear it. Let's go. It does not hurt. Now it's time for perfume. We'll go with plum. We'll go with plum ka body mist. कुछ भी हो जाए लड़कियां तुमको अच्छा स्मेल करना चाहिए. Cause why not?
I love this flavor. It's vanilla, I guess. No, it's Jen Colin, but it's very nice. I love it. So yeah, now it's time for my hair. So बालों के लिए मैं इतना कुछ करने का सोच तो नहीं रही हूँ. I'll just comb it because मैंने मेरे बालों का संबोड़ा करके रखा था, तो it will give me that नीचे से थोड़ा वेवी वेवी. अगर मैं बाल को कंघी नहीं करूँगी तो इट गिव्स ऐसा कर्ली कर्ली वाला थिंगी, बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मेरे हेयर मेरे साथ इनजस्टिस करते हैं व्हेन इट कम्स टू टेकिंग केयर ऑफ देम. मैं बहुत केयर करती हूँ बट हेयर मेरी केयर नहीं करता. आई डू हेयर केयर बट माई हेयर डू नॉट केयर अबाउट मी. सो या देखा, नॉट हो ही जाता है, मतलब नॉट होना इज इम्पोर्टेंट. सब समर. Should I remove my bangs? Oh हाँ, I have bangs by the way guys. जो इतना टाइम से छिपा हुआ था, that was my bangs. So if I remove my bangs, it will look like this. I should not actually. पापा का फोन आ रहा है. Wait. Yeah, so what I was saying कि bangs अगर निकालूंगी मैं, so I'll look like this. So मुझे आगे बाल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. I can keep my hair behind, but I feel कि मेरी बिंदी नहीं दिख रही इसमें, so I'll do like this. मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का bangs can come in front, and yeah, so this is my final look. लिप्स थोड़ा और डार्क करना चाहिए, बट ठीक है, आई एम ट्रैवलिंग एंड इतना डार्क लिप्स अच्छा नहीं लगता है. सो दिस इज माय फाइनल लुक. मतलब तुमको मुझे मेरा फिट भी दिखाना है, कैसे दिखाऊं? What should I keep behind? Where is the focus, huh? So this is my whole outfit and my whole look. What do you guys think? Let me know in the comments. I know comments itne आएंगे नहीं, but ठीक है. This is my whole outfit. This is my whole look. Well, see you in the next vlog in Manali, episode number 4. तब तक के लिए stay tuned. Bye bye. Love you. Good night. Good night. Good morning. Whatever.